Good morning, student. Now in this video we will study about the different components of blood. Okay, what are the different components of blood? Let's see the blood components. Okay, blood contain the plasma and formed elements. Okay, now plasma is a liquid part. Okay, further we will study in the depth. Okay, now formed elements. What are the formed elements? Formed elements are the cells that are present in the blood, like RBC, WBC, and platelets. RBC, erythrocytes. WBC is known as leukocytes and platelets is thrombocytes. Get it? And further the WBC and leukocytes is again divided into two parts, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes is further divided into three parts, basophil, eosinophil and neutrophil. And agranulocyte further divided into two parts, lymphocyte and monocyte. So these are the components of the blood. Get it? Now see, the first component of blood is plasma. Okay, अब now plasma contain the water, protein and ions. Okay, protein, water and ions. Get it? Water is present in the plasma 90 to 92%. Okay, and proteins 6 to 8% proteins are present. And which type of proteins are there? Look here, fibrinogen, globulin protein and albumin protein. Three types of proteins are present in the plasma. Ions, calcium, sodium, magnesium, chloride, carbonate, phosphate and other organic compounds are also present in the plasma. Get it? Okay, now see the plasma. Plasma is a straw colored viscous fluid constituting nearly 55% of the blood. Plasma is a straw color and viscous fluid is, it mean it can't flow easily. Viscous fluid है, इसका मतलब ज़्यादा easily flow नहीं हो सकता है. ओके, इट्स डिपेंड ऑन द विस्कस मीन, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है फ्लूइड, मतलब वो क्या है, ठीक है. ओके, दैट्स वाई विस्कस फ्लूइड है वो. ओके, 90 to 92% of plasma is water and proteins contribute 6 to 8% of it. And proteins are fibrinogen, globulin and albumins. Okay, these proteins are present in the plasma. Fibrinogen protein are needed for the clotting. अच्छा, आपके जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, कोगुलेशन होता है ब्लड का, जब आपको लग जाता है ना, लग जाता है तो ब्लड आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, वो ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है, मतलब वहाँ पर ब्लड की क्या हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है. दैट्स वाई द ब्लड स्टॉप ब्लीडिंग. ओके, योर ब्लीडिंग स्टॉप. ओके, तो नाउ दिस प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स is responsible for this, okay, for the coagulation or clotting of the blood. Next is the globulin, primarily are involved in a defense mechanism of the body, and the albumins help in the osmotic balance. Okay, तो ग्लोबुलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करता है, वो हेल्प करता है. और एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है सेल्स में, है ना, प्लाज्मा में. तो प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड एक्सेट्रा. Glucose, amino acid, lipids etc. are also present in the plasma. Okay, and they are always in the transit in the body. And the factor for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma. Coagulation और it mean उसमें क्या है, fibrinogen present है. Okay, तो ये contain करता है कौन, plasma. Get it? And the plasma is an inactive form. Blood are also present in the plasma in an inactive form. Plasma without the clotting factors is called serum. अगर plasma में क्या नहीं है, clotting factor नहीं होता है, clotting factors नहीं present है, then it is known as serum. तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरम बोला जाता है. Get it? Okay, now next is the RBC. Okay, plasma हो गया. Now it's a RBC, red blood corpuscles, and they are also known as erythrocytes. Erythrocyte, they are also known as red cells, या red blood cells, and they are most abundant of all the cells in the blood. Okay, and you know that a healthy adult man has an average of 5 millions to 5.5 millions of RBC, mm³ of blood, present in the blood. Okay, and RBC are formed in the red bone marrow in the adults. You know, जो रेड बोन मैरो होता है अपना, बोन मैरो में क्या होता है, उसी से क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है. ओके, and RBC are devoid of nucleus in the most of the mammals. You know that RBC is a nucleus-less cell. Every cell contain the nucleus. सब में सेल, सारी सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. बिकॉज यू नो न्यूक्लियस इज द मोस्ट, यू कैन से दैट जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द
सेल इज़ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही होता है मेन पार्ट जो होता है, गेट इट। तो जो आपकी आरबीसी है इट्स अ न्यूक्लियसलेस, उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज़ दैट बिकॉज इट कंटेन द, क्या करती है, हीमोग्लोबिन को कैरी करती है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो हीमोग्लोबिन को के लिए क्या हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा। तो इस हीमोग्लोबिन कम से कम थोड़ा स्पेस, क्योंकि बिकॉज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस का स्पेस, न्यूक्लियस को स्पेस चाहिए तो हीमोग्लोबिन के लिए थोड़ा जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी करे, दैट्स वाई न्यूक्लियस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द आरबीसी। एंड द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज़ 120 डेज। 120 डेज़ का इस लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का, 120 डेज तक ही वो सर्वाइव करती है। फिर न्यू आरबीसीज फॉर्म्ड होती है आफ्टर 120 डेज, ओके, ऑन द प्लेस ऑफ ईच। देन they have red colored iron pigment is present, you know, hemoglobin is present, okay, it's a complex protein, hemoglobin, that's why the color of the cell is red color, you everybody knows. And a healthy individual, जो healthy person होता है उसमें कितना, what is the hemoglobin, that is the 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood is present in a healthy individuals, okay. And these molecules, you know, play a significant role in the transportation of respiratory gases, because hemoglobin transport the respiratory gases. Which gas? That is the oxygen, okay. So it transport the oxygen, and the lifespan is 120 days. After they destroyed in the spleen, okay, they destroyed in the spleen, then hence spleen is, and that's why, because they destroyed in the spleen, that's why the spleen is known as the graveyard of RBC, okay, because they destroy in the spleen, that's why they are known as graveyard of RBC. Get it?